85. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. 5 अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें सईद बिन अभी सईद मकबरी ने, उन्हें अबू श्री का भी रजी अल्लाह अन्हु ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान की इज्जत करना चाहिए। इसकी खातिरदारी बस 1 दिन और रात की है, मेहमानी 3 दिन और रातों की, इसके बाद जो हो वो सदका है, और मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मेज़बान के पास इतने दिन ठहर जाए कि इसे तंग कर डाले। Book 78, Good Manners and Form, Chapter 85, To honor guest and to serve him. Narrated Abu Shurai al-Kabi. Allah's Messenger said, whoever believes in Allah and the Last Day should serve his guest generously. The guest's reward is to provide him with a superior type of food for a night and a day, and a guest is to be entertained with food for 3 days, and whatever is offered beyond that is regarded as something given in charity, and it is not lawful for a guest to stay with his host for such a long period, so as to put him in a critical position. Reference, Sahih al-Bukhari, Volume 8, Hadith, 6135.